आद्या हमें बताएगी कि क्या होता है स्टैटिस्टिक्स इन इट्स सिंगुलर सेंस। तो पॉज किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आद्या ने। ध्यान से देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स इज अ मेथड ऑफ कलेक्शन डन, ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन उसके बाद, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स कर रहे हैं जिसमें हम कलेक्शन ऑफ डेटा कर चुके हैं, अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। बेटा जैसे अकाउंट्स में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट स्ट्रांग हो तो आगे जाके इजी रहता है प्रोसेस, ऐसे ही इसमें भी अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा स्ट्रांग हो तो हेल्प करता है आगे वाले प्रोसेसेस में। इंटररिलेटेड स्टेप्स हैं, सीक्वेंस चल रही है, कलेक्ट हो चुका है डेटा, अब इसको ऑर्गेनाइज करना है, फिर प्रेजेंट करना है, फिर एनालाइज करना है, फिर जाके आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे। तो दी स्टेप्स आर इंटररिलेटेड। प्लीज, इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, लाइट चैप्टर है, not as boring as collection of data, relatively less boring but easy. चलो, in the previous chapter we learned how to collect data through primary or secondary sources. The collected data is complex and unorganized mass of figures. कह रहे ये तो बस डेटा ही डेटा है, रॉ डेटा है, क्या करूं मैं इसका, which is very difficult to analyze and interpret. This form of unorganized data is called raw data. तो collection of data से जो data आया, that is raw data. It needs to be organized. Therefore, in order to make the data capable of analyzing, analysis से पहले, this should be classified and tabulated. The collected data is classified into classes and subclasses according to the some characteristics. This process is known as classification. Organization and classification, they are the same thing. सेम स्टेप के ही नाम है, मतलब ना कि सर कलेक्शन के बाद तो ऑर्गेनाइजेशन था, क्लासिफिकेशन कब होगी? ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन आर द सेम थिंग. We are organizing the data or we are classifying the data. Same step, same process. The process of tabulation will be discussed in the next chapter. Presentation का part है वो, tabular presentation, graphical presentation, diagrammatic presentation, that is all part of presentation. Before presentation, you need to organize the data. So organization and classification are the same thing. ध्यान से देखेंगे. Classification. What do you mean by classification? Classification is the process of arranging the data into sequences and groups according to their common characteristics. There should be a common characteristic on the basis of which you will classify the data. कॉमर्स के स्टूडेंट्स इधर हो जाएं, साइंस के इधर हो जाएं, ह्यूमैनिटीज के इधर हो जाएं, तो क्लासिफिकेशन, मेल फीमेल कुछ भी क्लासिफिकेशन, देयर शुड बी सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स. You need to know the exact definition. Classification or organization are the same thing. Classification is the process of arranging the data into sequences and groups according to their common characteristics or separating them into different but related parts. Different but related parts. Commerce and science, different but 11th के students. There should be some similarity yet some differences. कोई तो कॉमन लिंक होना चाहिए ना, कि ऐसे थोड़ा ना किसी को भी 11th के बच्चे तो हो गया कॉमन लिंक, separated into different streams. Under classification, on the basis of chosen characteristics, similarity and dissimilarity in the various items are noted, and the items exhibiting the similarity are grouped together in one class. Through classification, we are trying to strike a note of homogeneity and in the heterogeneous elements. Heterogeneous मतलब unrelated elements in the sense कि उनमें बड़े सारे different characteristics हैं. We are trying to make it homogeneous. तभी तो comparison possible होगा. मुझे मार्क्स निकालने थे एवरेज, कह रहे हैं कॉमर्स के मार्क्स साइंस से कंपेयर मत करो,
साइंस पहले क्लासिफाई कर दो, फिर साइंस वालों के एवरेज अलग निकालो, कॉमर्स वालों के अलग निकालो, ह्यूमैनिटीज वालों के अलग निकालो, तो ज्यादा रिलायबल होगा आपका जो भी कंक्लूजन होगा। तो क्लासिफिकेशन क्या करती है, हेट्रोजेनस डेटा को होमोजेनस बनाने की कोशिश करती है। In the words of Professor Connor, classification is the process of arranging things either actually or notionally in the groups according to their resemblances and affinities, and give expression to the unity of attributes that may subsist among a diversity of individuals. Just read. Exam में आएगा define classification. So this is the definition which we have to use. Classification of data serves the following purposes. It condenses the raw data into a form suitable for statistical analysis. Collection of data में तो बस सारे स्टूडेंट से फॉर्म भरवाया था, वो तो रॉ डेटा है, मीनिंगलेस है अगर वहीं पे खत्म कर दोगे तो। इस डेटा को और अरेंज करो, इसमें से कितने बच्चे कॉमर्स के हैं, या चलो अब कुछ नया सर, बस कॉमर्स साइंस बहुत हो गया, चलो कितने बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कितने फुटबॉल खेलना चाहते हैं, कितने बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं, सेग्रीगेट करो। फिर देखा अच्छा फुटबॉल की लिस्ट बहुत मोटी है। समझ आ रही ना बात? तो कोई कोई रीजन होना, कोई बेस होना चाहिए क्लासिफिकेशन का। It condenses the raw data into a form suitable for statistical analysis. It will always depend on the purpose for which the statistical inquiry was initiated at the first place. It removes complexities and highlights the features of the data. It facilitates comparison and in drawing inferences from the data. It provides information about the mutual relationship among the elements of the data set. It helps in statistical analysis by separating elements of data into a set of homogeneous groups, and hence brings about points of similarity and dissimilarity. So most important is makes the data more meaningful, makes the data more meaningful. A step towards analysis and interpretation. A step towards, इसमें बीच में और आएंगे, बट कह रहे रॉ डेटा तो अभी मीनिंगलेस है, अभी मीनिंगलेस है। जैसे अकाउंट मतलब छोड़ो, जर्नल अपने आप में कोई प्रॉफिट नहीं बता रहा, मतलब अभी कलेक्शन हुई है डेटा, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि क्या अच्छा चलो फिर क्या रहा, कह रहा अभी थोड़ी ना बता सकते हैं क्या रहा, कि कौन सा अगर एकेडमी खोलनी है तो ज्यादा किस पे ध्यान देना है, कह रहा अभी नहीं, अभी पहले डेटा को ऑर्गेनाइज करने दो, आगे बढ़ेंगे तब बता पाएंगे। तो अभी हमने कहा मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन।